Hello friends, this is Dr. Benzode and I'm back with a new video, and today we are going to see about Apthous ulcers. तो दोस्तों Apthous ulcer को हम Apthous stomatitis भी बोलते हैं. So ये हमारे मुंह के छाले होते हैं सिंपली, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी अदर नॉर्मल अल्सर्स एंड Apthous ulcers. तो Apthous ulcer का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दे आर रिकरेंट, वो बार बार होते हैं एंड दे आर पेनफुल. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे, डैट रिकरेंट एप्थस स्टोमाटाइटिस इज़ अ कॉमन डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पेनफुल रिकरिंग सॉलिटरी और मल्टीपल अल्सरेशंस ऑफ द ओरल म्यूकोसा. तो यहीं पे दो वर्ड्स हैं, एक है हमारा दे आर पेनफुल एंड दूसरा है हमारा रिकरिंग. दे मे बी सॉलिटरी और दे मे बी मल्टीपल. अब आती है इसकी ईटियोलॉजी. तो ईटियोलॉजी है एल फॉर्म ऑफ अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस. सो जब भी एल फॉर्म ऑफ अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ओरल कैविटी में होती है, हमारे टी सेल्स एक्ट अगेंस्ट दीज. सो देयर इज अ टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. द टी सेल that are produced against the streptococcal heat shock protein, they cross react with the oral mucosa leading to mucosal damage. है ना फ्रेंड्स. तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि जो हमारे टी सेल होते हैं दे क्रॉस रिएक्ट विद द ओरल म्यूकोसा लीडिंग टू म्यूकोसल डैमेज एंड अल्सरेशन. Now we go on to the predisposing factor. So the most common predisposing factor is ट्रॉमा. उसके बाद होता है स्ट्रेस. ये देखा गया है कि जिन इंडिविजुअल को स्ट्रेस होता है उससे भी उनको एप्थस अल्सर्स हो जाते हैं. फिर आता है हमारा हेमेटेनिक डिफिशिएंसी, लाइक आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, वाइटामिन हो गए सारे. इसलिए जब भी मुंह में अल्सर्स होते हैं तो कोई भी दवाई के साथ हमको मल्टीवाइटामिन भी दिए जाते हैं. उसके बाद वी ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. अब ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है. कोई भी पेशेंट आता है, वी मस्ट take his family history for any Apthous ulcers. Then we have HIV. HIV is a predisposing factor for major Apthous ulcers. Friends, you can also see the image of Apthous ulcers on the labial mucosa and the tongue. Now we go on to the systemic causes, and in them we have the Crohn's disease and ulcerative colitis and gluten-induced enteropathy. So in all these disorders, antibody are produced against the gut mucosa, which leads to inflammation and ulceration. Next आता है हमारा syndromes. The syndrome associated with Apthous ulcers. तो दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा वो निमोनिक है. हिंदी में आप अगर याद करो, मीठा दिखने वाला प्यार है बेमान, और स्वीट प्यार बेमान है. So from sweet we have sweet syndrome. From प्यार के पी से we have PFA syndrome, that is periodic fever, aphthe, pharyngitis and cervical adenitis. And from बेमान के B से we have Behcet syndrome. From मान M we have magic syndrome, that stands for major aphthous and generalized inflamed cartilage. And from M we also have Marshall syndrome. And from H we have HIV infection and cyclic neutropenia. Actually they are not syndromes, but for the sake of completion of the mnemonic I have made so. Now friends, we can actually classify the Apthous ulcer majorly into three types. These are the minor Apthous ulcers, major Apthous ulcers and recurrent herpetiform ulcers. And the fourth is recurrent ulcers associated with Behcet syndrome. So recurrent Apthous minor ulcers are also known as canker sore. नाम में ही है माइनर. माइनर मीन्स छोटा. जो छोटे छोटे होते हैं पत्थर, उनको हम लोग बोलते हैं कंकड़. सो उसी से इसका नाम आ गया. recurrent Apthous minor ulcers are also known as canker sore. Then the other name of recurrent Apthous major ulcers is very important. They are known as periadenitis mucosa necrotica recurrens or Mikulic's scarring aphthe or Sutton's disease. And then recurrent herpetiform
ulcers. They are known as herpetiform because clinically they resemble herpes lesion, but we do not find any viruses in here. Now friends, we go on to the clinical features. So recurrent minor apthe के क्लिनिकल फीचर हम लोग सबसे पहले देखेंगे. इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन, और जो एज पीरियड होता है 10 to 30 ईयर्स. तो आपके पास अगर 10 to 30 ईयर्स की फीमेल आई और इनकी वो भी होती है फेमिलियल टेंडेंसी, तो इट बिगिंस एज अ सिंगल और मल्टीपल सुपरफिशियल इरोजन दैट आर कवर्ड बाय अ ग्रे सूडो मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ वी फाइंड अ रेड हैलो, एंड इन द सेंटर वी सी अ नेक्रोटिक सेंटर. इट इज़ पेनफुल एंड इट इंटरफेयर विद ईटिंग एंड स्पीच, और साइज इसका 2 to 3 mm होता है. एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरेंस इज द buccal mucosa, that is the non-keratinized mucosa or labile mucosa, that is mucosa which is not attached to the periosteum. So we can say that minor Apthous ulcer do not occur in smoking. Why? Because smoking leads to keratinization, and minor Apthous ulcers only occur on non-keratinized or labile mucosa. तो इसकी और कौन सी साइट्स होती हैं? लाइक वी हैव बक्कल म्यूकोसा के अलावा वी हैव लेबियल म्यूकोसा, बक्कल एंड लिंगुअल सल्काई, टंग, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, जिंजाइवा. एंड द अल्सर्स persist for 7 to 14 days and they heal with no scarring. That is also a difference between the minor Apthous ulcer and major Apthous ulcer, that the major Apthous ulcer heal with scarring. Recurrent Apthous major ulcers, first of all, they are very painful and they cause severe dysphagia, difficulty in swallowing, and they are found more in HIV patients, but there is no age predilection. Again, women are more commonly affected than male, and it usually occurs after puberty. Size is greater than 1 centimeter in diameter and persists for 6 weeks. Major Apthous ulcer can occur on both keratinized and non-keratinized mucosa. We saw minor Apthous ulcer only occurred on non-keratinized mucosa, but the major Apthous ulcer can occur on both. Then we go on to recurrent herpetiform Apthous ulcers. तो नाम में है herpetiform, तो like herpes, so it clinically looks like herpes lesion. These are crops of multiple small shallow ulcers up to 100 in number, और ये हमारी ओरल कैविटी में कहीं पर भी मिल सकते हैं. These are the least common and the most recurrent, and they are found on the ventral surface of the tongue and the floor of the mouth. So in histology, the main feature is we see cells which are known as Annett-Schau cells. These are elongated epithelial cells and have a bar of chromatin, but they are not pathognomonic for Apthous ulcers. Apthous ulcer के लिए they are not pathognomonic. They are also found in other conditions like sickle cell disease, megaloblastic anemia, iron deficiency anemia. Children receiving chemotherapy for cancer and normal people. And the treatment is we give tetracycline mouthwash 250 mg per 5 ml, used 4 times daily for 5 to 7 days. 1.5% cortisone acetate applied locally. Levamisole antihelminthic drug. So thank you friends.